general English में we have different types of chapters, and the first important thing that you cover in general English course, okay, or in the grammar part is that we cover the things parts of speech. Okay, so total 8 parts of speech are there. Okay, and this thing you have done in your childhood also. Okay, noun, pronoun, adjective, conjunctions. Okay, so all this thing we will once again look into that. We will see what are the different types. Okay, then the second part of your syllabus or the exam which you are preparing is the writing skills. Okay, so this grammar part is very much important, as well as the writing part is also important. So first we will try to cover the writing part, which will include your parts of speech. Okay, then it will include your narration part. Okay, narration part, modals, verbs. Okay, so verbs is very much important, and verbs बहुत ही ज़्यादा elaborate जो है, सबसे elaborate जो है topic है, because verbs में बहुत सारे आपके टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक टेंसेस आते हैं, मोडाल्स आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, ठीक है. सो वर्ब्स का पार्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है. देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देन वी हैव लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग. ओके, so all this thing we are going to cover. So first we will start with the first part of speech, that is nouns. Okay, so nouns basically बहुत ही ज़्यादा easy है. Everyone know that noun is a naming word. Okay, so noun is basically coming, or this word is coming from a Latin term. Okay, let me change the color of the pen. So noun is coming from a Latin term. Okay, nomen, जिसका meaning होता है name. ठीक है, that is why noun is called as a naming word. And you know that noun is basically used to refer different types of objects. Okay, and it is used to refer living creatures, places, actions, quality, ideas, emotions. So every other thing that we used to refer is a noun. Okay, because everything has a name. Okay, so this is what is not noun all about. And noun is one of the most important part. Okay, lexical category या फिर parts of speech का बहुत ही important part है, सबसे पहला part है. So if I talk about certain kinds of examples, so you look here in the example, please hand in your assignments by the end of the week. Okay, so ये जो words है जो कि italicized किए गए, okay, the words which are italicized, so all these words are nouns. Okay, so you can see here, please hand in your assignments by the end of the week. So assignments is a noun. Cleanliness is next to godliness. Cleanliness and godliness both are noun. Plato was an influential philosopher in ancient Greece. Okay, so Plato is a noun. Okay, because the name of the person is there. Philosopher, his profession. Greece, name of the city. Okay, so चारों तरफ जो है हम nouns ही nouns देखते हैं, और nouns बहुत सारी चीज़ों को denote करता है. ठीक है, अगर हम लोग बहुत ही वेग टर्म में देखें तो नेम प्लेस एनिमल थिंग होगा, बट अगर हम लोग ब्रॉडर सेंस में देखें तो बहुत सारी चीज़ों को नाउन रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटीज़ को, आइडियाज़ को, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को. ठीक है, और हमारे लेक्सिकल पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो नाउ वी विल जंप ऑन टू द टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ नाउन. ओके, सो नाउन बहुत ही क्लियर है. अब वी विल सी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. ठीक है, किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं. ओके, so the first is proper noun, second is common, third is collective, fourth is countable, fifth is uncountable. Okay, इसके अलावा भी you have abstract noun, concrete noun, possessive noun. Okay, so all this thing we are going to see, but these are the broader classification which you will see every now and then, and you have studied in your classes and colleges. Okay, so here यहाँ पे बहुत ही basic सा जो है डेफिनेशन दिया गया है हर एक नाउन का, कॉमन नाउन का, प्रॉपर का, एब्स्ट्रैक्ट का, कॉन्क्रीट का, काउंटेबल का, अनकाउंटेबल, कंपाउंड नाउन्स, कलेक्टिव, सिंगुलर, प्लूरल. ओके, सो वन बाय वन वी विल सी. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर एंड कॉमन नाउन? सो प्रॉपर या फिर कॉमन प्रॉपर नाउन जो होते हैं, जिसको हम लोग प्रॉपर नेम भी बोल सकते हैं, is that type of noun that basically gives a special or a unique identity. ठीक है, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, नेम हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, आइडिया हो, कुछ भी हो, वो चीज को वो एक यूनिक जो है वो डेफिनेशन देता है, या यूनिक जो है वो एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, जैसे कि इंडिया है, पेगासस है, जुपिटर है, कॉन्फ्यूशियस है, पिकोड है.
again if I talk about common nouns, so what are common nouns? Common nouns वो noun होते हैं basically जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक नहीं होते. ओके, दे आर नॉट यूनिक एंड दे आर बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब अ क्लास ऑफ एंटाइटीज. ठीक है, क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, माइंड इट क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास नॉट ग्रुप. ठीक है, ग्रुप आएगा तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास ऑफ एंटाइटीज. ओके, सो क्लास ऑफ एंटाइटीज के लिए हम लोग कॉमन नाउन यूज करते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो से जनरली वी यूज कॉमन नाउन्स. ओके, like country, animal, planet, person or ship. Okay, so this is what it is. And here the basic example is given. Okay, proper noun का name होता है, common noun का कोई भी name नहीं होता है. Okay, and you can also check out the examples, okay, of both the nouns. And here are some few sentences also given, okay, which you can see in this PDF. Like Rubina is a very beautiful girl. I finished school last June. Okay, so every other word that is highlighted here, okay, here it will be a proper noun, whether it is the name of the girl Rubina or whether it is the name of the month June. Okay, then on the second side, okay, you will see that it is representing the class of entities. Okay, so how many books are there? Okay, so books will be common noun. He goes to school by car. School and car will be a common noun because it is basically referring to the class. Okay, so now we will move on to the another type of noun, that is collective noun. Okay, collective noun जो है वहाँ पे हम लोग shift करते हैं. So collective noun is basically used to refer the group. ठीक है, so collective और common noun में यही difference है that common noun is basically representing class and collective noun is basically representing groups. Okay, so you are not children, जो कि आप children की तरह definition दें. ठीक है, so whenever somebody asks you, so you can tell them this difference. So collective noun is basically referring to groups and collective nouns जो है वो singular और plural दोनों ही हो सकता है. ठीक है, अगर सिंगुलर होता है यानी कि एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लूरल होगा तो एक से ज्यादा को करेगा. ओके, एंड द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स इंक्लूड कमिटी, गवर्नमेंट, पुलिस. ओके, so all this will come under the collective noun, and this thing we have seen an army of soldiers, a team of ducks, a bunch of keys. Okay, a school of a students of class. Okay, so all these are collective nouns. Then the another kind of noun is compound noun. So compound noun बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है because many times compound nouns are not discussed properly. Okay, compound nouns are not discussed properly, so it becomes very much important. So compound noun, as the word suggests, ये दो word से मिलके या दो noun से मिलके बना हुआ आता है. Okay, two or more words. Okay, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. और compound noun में क्या है कि noun plus noun भी आ सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है. ठीक है, सो दोनों टाइप्स आ सकते हैं. कंपाउंड नाउन जो है वो हमेशा एक सिंगल नाउन की तरह काम करता है. ओके, मींस कि अगर कंपाउंड नाउन में टू से ज्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, देन आल्सो दे विल एक्ट लाइक अ सिंगल नाउन. ओके, एंड इट कैन बी मॉडिफाइड बाय ऑब्जेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स एज वेल एज अदर नाउन्स. सो व्हेन वी विल सी एडजेक्टिव, तो यू नो कि एडजेक्टिव आप लोगों को पता होगा कि एडजेक्टिव एक ऐसी चीज होती है या एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है that is basically used to modify the noun. ठीक है, नाउन को अच्छे करने में, मॉडिफाई करने में एडजेक्टिव्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है. ठीक है, तो कंपाउंड नाउन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. कंपाउंड नाउन में भी एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन की हेल्प कर रहा है, कंपाउंड नाउन की हेल्प कर रहा है कि वो मॉडिफाई कर सके. ओके, एज अ मॉडिफायर इट एक्ट्स. So here are some of the example of compound nouns. Sea plus food, so it becomes seafood. So seafood here is a compound noun. Then ice cream, swimming pool, bus stop, grasshopper, self-confidence. All this comes under the category of compound nouns. Okay. So compound nouns को जो है हम लोग 3 parts में divide करते हैं. ठीक है, 3 parts में हम divide करते हैं. पहला होता है open या फिर space. ठीक है, पहला जो होता है वो होता है open या space. Okay, so the first one is open or spaced. So open और spaced compound nouns क्या होता है, जिसमें जो है ना तो कोई means कि when two words will act as a one noun. Okay, means they will become a compound noun like here 10:2. But यहाँ पे space दिया रहेगा and there will be no other thing. Okay, space will be there. Okay, but this will become a compound noun.
Then the second type is hyphenated. So यहाँ पे जब भी you will combine two compound nouns or you will combine any two nouns or one adjective or one noun, so here you will always give hyphen. Okay, ऊपर वाले में सिर्फ space दे रहे थे, नीचे वाले में hyphen दे रहे हैं. Okay, so that it become hyphenated compound noun. Okay, then the third one is closed or solid. Third वाले में ना तो हम लोग space देंगे ना ही hyphen देंगे, but we will combine them together, like bed plus room will become bedroom. Okay, or butter plus fly will become butterfly. So these are the three types: open, closed, and hyphenated. Okay, and here you can check the example also. Closed form में soft ball, chopstick, toothpaste. Hyphenated में six pack, son-in-law, 2-year-old. तो hyphens का use किया गया and they will act as a compound noun only. Open form में hot dog, fish tanks, post office. Okay, so this is what it is, and here the 30 compound nouns are also given, which you can check. So as I was telling you कि compound noun जो है ना वो noun plus noun से मिलके बना होता है. Okay, verb plus noun can also come, adjective plus noun can also come, preposition plus noun can also come, and verb plus preposition can also come. Okay, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि compound noun है तो सिर्फ noun ही present रहेगा. हो सकता है कभी कभी noun ना भी हो, verb और preposition ही मिलके बना रहे हो. ठीक है, adjective या verb ही मिलके बना रहे हो, या फिर adjective plus noun मिलके बना रहे हो. Okay, so these are the following things which you have to remember. अगर noun plus noun आता है, then it will be boyfriend, milkman, firefighter, hat trick. Okay, and if preposition plus noun is coming, then downtown, bystander, underworld. Okay, so all these things you can see. So here are 10 examples of compound noun also given. If I read it, a policeman has the power to arrest a criminal. Okay, so policeman, closed compound noun. Okay, third one, is there any water left in the water tank? Open compound noun. Okay, so with this you will identify that what kind of compound noun it is. Okay, then compound noun जो है, मैंने पहले बोला था सिंगुलर फॉर्म भी होता है, साथ ही साथ इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है. ओके, तो सिंगुलर फॉर्म तो बहुत इजी है कंपाउंड नाउन का, लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म आ रहा है तो व्हाट यू विल डू. ओके, या हाउ यू विल आइडेंटिफाई. सो बेसिकली इफ प्लूरल नाउन इज कमिंग, सो अगर आपको कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है, सो यू विल सिंपली ऐड एस. ओके, आप सिंपली एस एंड में लगा देंगे या फिर बेस वर्ड में एस ऐड कर देंगे. ओके, so here you will see the example. This is singular compound noun है और tennis shoe. Okay, so यहाँ पे क्या कर दिया गया, s ऐड कर दिया गया, so tennis shoes हो गया, और of course नंबर तो ज्यादा होगा तभी तो वो plural होगा. Okay, so 3 tennis shoes. Then 1 assistant headmaster, and again 5 assistant headmasters. Okay, so you can easily convert singular compound noun to plural compound noun by adding s to the base word. Okay, so now we will see that what is the difference between the compound and collective noun. Okay, both of the nouns we have seen. Collective noun जो है वो ग्रुप्स को रिफर करता है, कंपाउंड नाउन जो है वो दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल वर्ड्स को लेके बनाया जाता है. ओके, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस भी यही है. कंपाउंड नाउन is formed from 2 or more individual words, like here you can see rainfall, poison ivy, court martial. Okay, but when we talk about collective nouns, so collective nouns are basically grouped together and it basically combines the whole group. Okay, चाहे वो group with people का हो, objects का हो, things का हो या animal का हो. Okay, so ये basic सा difference है दोनों के बीच. Okay, so now if we move into the further classification. Okay, so first we have talked about nouns. What is nouns? Okay, then we have seen the various types of noun. Okay, broader classification we have talked about, that was proper and common noun. Okay, then we have seen collective noun, then we have seen compound nouns. Okay, इसके अलावा countable, uncountable, abstract and concrete nouns भी आते हैं. ठीक है, लेकिन उससे पहले वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि सारे के सारे नाउन्स को आप दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. ओके, मीन्स कि अगर आप एकदम ही ब्रॉडर क्लासिफिकेशन लेंगे, सो एवरी अदर नाउन विल आइदर बी अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन. ओके, अगेन इफ यू विल क्लासिफाई कॉमन नाउन, देन कॉमन नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, that will be countable and uncountable, and again if you will divide countable and uncountable noun, then they will be into concrete and abstract. Okay, so इस तरह से क्लासिफिकेशन आ रहा है. फर्स्ट नाउन,
then noun will break into two, proper and common, then common will break into two, countable and uncountable, then countable will become concrete and uncountable will become abstract. Okay, so इस तरह से classification हो रहा है. So this classification you have to keep in mind. So if I talk about countable noun, so countable noun, or we can also simply refer to them as count noun. Okay, count noun, countable nouns जो है बिल्कुल common nouns की category में ही आते हैं. Okay, because common noun से ही तो division हुआ था उनका. Okay, and countable noun can also take the plural form. Okay, so ये numbers को quantifiers को लेके जो है बनते हैं, क्योंकि name वही suggest कर रहा है. countable का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप count कर सकते हो. Okay, so of course ये बात इसमें numerals और quantifiers तो आएंगे. जैसे न्यूमरल्स में 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 4, और क्वांटिफायर्स में सेवरल हो जाएगा, एवरी हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा, मोर हो जाएगा, मैनी हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज ऑल काउंटेबल नाउन ऑल अबाउट. ओके, एज वेल एज काउंटेबल नाउन में इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी आ जाते हैं. ठीक है, सो आर्टिकल्स आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स है. ठीक है, एक तो है आपका ए, दूसरा है एन और तीसरा है द. ठीक है, सो व्हेन वी विल बी डूइंग आर्टिकल्स, so again we will be seeing this thing. Okay, so a और an जो आर्टिकल्स है वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है. ओके, सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि काउंटेबल नाउन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल एन को लेता है या ए को भी ले सकता है. ओके, सो एग्जांपल्स लाइक चोर, चेयर, नोज एंड ओकेजन. ओके, सो दिस इज व्हाट काउंटेबल नाउन इज ऑल अबाउट. So the second type of noun is uncountable noun. Okay, so uncountable noun can also be referred to as mass noun. Okay, mass noun or non-count noun. Okay, and they are basically slightly different from the count or the countable noun, because uncountable noun में ना तो plural आता है. Okay, ना ही ये numbers को combine करता है, ना ही quantifiers को combine करता है. Okay, मतलब जितनी सारी चीजें जो काउंटेबल नाउन में प्रेजेंट थी ना, वो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है अनकाउंटेबल. ओके, दिस थिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि प्लूरल फॉर्म नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन में. ठीक है, अनलाइक काउंटेबल नाउन जिसमें होता है प्लूरल फॉर्म. तो यहाँ पे एग्जांपल भी है, जैसे कि फर्नीचर जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम लोग कभी भी फर्नीचर्स नहीं बोलते. ओके, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है और ये गलत हो जाएगा, because furniture will come under the category of uncountable noun. Okay, but बहुत सारे लोग फर्नीचर को फर्नीचर्स करते रहते हैं, but it will be a wrong English. Okay, then again countable noun को हम लोग और ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, that is called as concrete noun. Okay, so concrete noun क्या होता है? concrete noun जो है फिजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है. ओके, फिजिकल एंटिटीज यानी कि जितनी भी चीजें हैं जो physically you can see. Okay, all these things you can see physically, you can visualize. Okay, that will come under the category of concrete noun, or basically all those things जो कि आप अपने जहाँ पे 5 sense of organs you are using. Okay, like see, touch, taste, hear, smell. So 5 sense of organs जहाँ पे भी आपके use हो रहे हैं, that will be coming under the category of concrete noun. Okay, then the abstract noun. So abstract noun will be those noun. Okay, जहाँ पे आप जो है कहीं पे भी उस चीज को देख नहीं पा रहे. ओके, एंड दे आर यूजुअली आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जब भी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात होती है जिसके अंदर आइडिया, थॉट, इमोशन, कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, एज वेल एज यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स या सेंस ऑर्गन्स का कोई काम तो है नहीं. ओके, सो एग्जाम्पल विल बी सिंसियरिटी, anger, happiness, ego, hope, love, mercy. Okay, so all this will be the example of abstract noun. Then singular noun, you know, singular noun जो है वो एक person को represent करता है, plural noun जो है वो एक से ज़्यादा को करता है. Okay, so this is the basic difference between these two. But now we will see some of the rules. Okay, कैसे you can change singular noun into plural noun. Okay, so how you can change singular to plural noun? So suppose if you have to change singular to plural noun. Okay, so first will be कि अगर बहुत ही ज्यादा कॉमन नाउन आ रहा है, ओके, कॉमन नाउन इज कमिंग एंड यू हैव टू चेंज इट टू सिंगुलर टू प्लूरल,
So you will simply add s. Okay, so chair will become chairs, book will become books, pencil will become pencils. Okay. Again, if any noun is coming जिसका ending ch, sh, s या x में हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग es ऐड कर देंगे. ओके, लाइक पीच, ब्रश. ओके, पीच, ब्रश, ये सब के एंडिंग में ch आ रहा है, किसी में sh आ रहा है, तो यहाँ पे we will add es so that we can convert it into plural. Okay. Again same thing. Next rule. बहुत सारे nouns में the vowel it is ending with the vowel. Okay, so many of the nouns will end in the vowel. Okay, but vowel में end तो हो रहा होगा, but साथ ही साथ last में y भी आ रहा होगा. Okay, साथ ही साथ last में y भी आ रहा होगा. So again we will add s. Okay, so like here boy is there, o आ रहा है, o is a vowel, but इसके बाद फिर y आ रहा है. Okay, means after the vowel y will be coming. Okay, or the vowel sound will be coming, then again we will add s. Okay, then the next rule is the consonant is coming and then after that consonant y is coming. Okay, so we will basically add or change that y from ies. ठीक है, आप ies को add कर देंगे. Okay, ies you will add. So lady will become ladies, country will become countries. Okay, then there are another noun जहाँ पे ending f या fe में हो रहा होगा. So again the rule will change. You will add ves. Okay, ves you will add. So leaf will become leaves, knife will become knives. Okay, again बहुत सारे noun में जो है वो last में o आ रहा होगा. Okay, और उसके पहले consonant आ रहा होगा. So mango, उसमें भी आप लोग क्या करेंगे, es को add कर देंगे. Okay, so mango will become mangoes, potato will become potatoes. Okay, then many of the nouns will be there जहाँ पे फिर से last में हो रहा होगा, but इस o से पहले vowel आ रहा होगा. Okay, so जैसे ही vowel आ रहा होगा we will add s. Okay, और अगर consonant आ रहा है then we will add es. Okay, so ये बहुत ही basic सा rule है which you will use when you are converting singular to plural noun. Okay. Now we will talk about the entirely different category of noun, that is possessive noun. Okay, तो possessive noun क्या होता है? possessive noun ऐसे noun होता है जिसको जो है जिसके लास्ट में s आता है. ओके, और वो भी apostrophe वाला s आता है. ठीक है, so this comma is called as apostrophe. Okay, and then s is coming. So basically this is what we called as a possessive noun. Okay, so whenever you will see any noun and at that noun ending it is ending with apostrophe s, then you should understand that it will come under the category of possessive noun. Okay, possessive noun can both be singular as well as plural. Okay, तो अगर plural होता है possessive noun तब भी हम लोग apostrophe s ऐड करते हैं. Okay, already अगर उसमें s रहेगा तब भी we will add apostrophe s. Okay, so don't get confused. Like here, the cat's toy was missing. ठीक है, so यहाँ पे ये singular noun है, cat is a singular noun. We have added apostrophe s and then it has become possessive noun. किसके ऊपर possession दिखा रहा है? टॉय के ऊपर. ठीक है, किसका टॉय था? कैट का टॉय था. ओके, so possessive noun का मतलब ये होता है where you are showing possession, ownership in any type of thing. ठीक है, so that becomes possessive noun. Okay, then the second example is I have been invited to the boss's house for dinner. Okay, so boss's house will come under the category of plural possessive noun. How? Boss के last में double s आ रहा है, you can see. But ये plural होते हुए भी, okay, boss को plural होते हुए भी फिर भी हम लोग apostrophe s को add कर रहे हैं. Okay, so you can see that how plural possessive noun works. Okay, boss का possession दिखा रहा है किसके ऊपर? house के ऊपर. Okay, again the same thing. The trainer flipped a fish into the walrus open mouth. Walrus के mouth के ऊपर possession दिख रहा है, so possessive. Here is the list. Okay, alarms ringing, ankles bones, apples taste, armchairs arms. ठीक है, तो ये पूरा list है possessive noun का. Go through it. Okay, then now the types of noun has basically been completed. ठीक है, we have seen different types of noun. So once again, if we will refresh, so we have seen what is noun, different types of noun. Okay, सारा types of noun हम लोग ने देख लिया, whether it may be concrete, abstract, collective, compound, possessive. Okay, now we will talk about what happens when noun act as a subject. ठीक है, so whenever you have read any sentence, so you know कि हर एक sentence में ना ये चीज present होता है, subject. ठीक है, subject present होता है और object तो present होता ही होता है.
क्या होता है जब नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो हर सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट रहता है और वो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब वो सब्जेक्ट या तो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, या फिर वो कुछ एक्शन कर रहा हो, या फिर वो वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। बट इट विल ऑलवेज बी अ नाउन, ओके। So for in this sentence you can see Maria is happy. So Maria is a noun as well as Maria is acting as a subject also. Okay, so this thing you have to keep in mind. Then नाउन जो है सब्जेक्ट एक्ट करने के अलावा साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट्स भी बन जाते हैं, ठीक है। इन अ सेंटेंस इफ वी टॉक अबाउट, किसके ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो या तो अगर नाउन ऑब्जेक्ट बनेंगे ना तो या तो वो डायरेक्टली यूज होंगे या फिर इनडायरेक्टली भी यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब बहुत तरह से यूज हो सकता है। either it can be used as a direct object, either it can be used as a indirect object, okay। So this will become more clear once we will do work, okay। give the books to her, okay, give the books to her, okay। so यहाँ पे books जो है वो direct object बन गया, okay, and her becomes your noun, okay। so sorry, her becomes your indirect object, okay। so give the books to her, so यहाँ पे दोनों ही चीज आ रहा है, books direct object हो जा रहा है, her जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, और नाउन जो है वो दोनों तरह से काम कर रहा है, ठीक है। नाउन यहाँ पे बुक्स भी है, हर भी है, ठीक है, और दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के रूप में it is working, okay। so now if we discuss about the gender in noun, so there are four types of genders in noun: masculine, feminine, common and neuter, okay। so gender का केस भी बहुत ही ज्यादा important हो जाता है नाउन में when you are talking। masculine simply referring to the male or the male member of the species, feminine फीमेल को या वुमेन को जो है रिप्रेजेंट करेगा। कॉमन नाउन का कोई भी जो है वो क्या बोलते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। अगर हम लोग जेंडर के हिसाब से देखें नाउन को, तो कॉमन नाउन जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ओके। इट कैन आइदर बी मेल और वुमेन, ठीक है। सारे के सारी चीजें जो है इंक्लूड हो जाएंगी। और न्यूटर नाउन जो है वो हम लोग थिंग्स को रिफर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन और न्यूटर नाउन दोनों में ही जेंडर का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। न्यूटर नाउन चीजों के लिए यूज होता है ज्यादातर, और कॉमन नाउन जो है वो कॉमनली यूज करने के लिए, जैसे हम लोग नॉर्मल वाला कॉमन नाउन यूज करते थे, सो इट इज बेसिकली यूज्ड एज दैट ओनली, ओके। सो पेरेंट कैन आइदर बी मेल और वुमेन, यानी कि मैस्कुलाइन और फेमिनिन दोनों ही हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड कैन आल्सो बी मैस्कुलाइन और फेमिनिन। So this is what it is when we talk about the gender in noun. Okay, four cases होते हैं: masculine, feminine, common and neuter. So okay, now we will do one activity. Okay, so here you have to identify the noun in the below sentence. Okay, बहुत ही basic सा exercise है. Okay, so the first sentence is I am an obedient student. Okay, so यहाँ पे you can write in the comment section that what will be the answer. Okay, what will be the noun here? I am an obedient student. Anyone? Is my voice clear to you all? Yeah. So I am an obedient student में student जो है वो आपका noun हो जाएगा. Okay. Okay. In the second sentence, very good. Certainly the bread is made of wheat. Okay. In the second sentence, try to answer. Yeah. So the bread will also be there. Wheat will also be there. Okay. Okay. Now third one. The ship floats on the surface of the water.
Yeah, ship, water, boat it will be. Okay. Fourth one, the oxen draw the bullock cart. Yeah, oxen, bullock cart. This is a red building. Okay, yeah. So building will be there. Okay, again we will do exercise, but here you have to tell me the type of noun. Okay, अब आपको noun के साथ साथ you have to tell me that what type of noun the present is there. Okay, so in the first sentence, your son has written an interesting poem. Okay, so what is the noun as well as what type of noun it is present. Okay, जितना भी types हम लोग ने देखा, singular, plural, compound, collective, abstract, concrete, countable, uncountable. You can give me many any type. Okay, as in when you are knowing or are able to think. Okay, sun will be the noun, but what kind of noun it will be? Yeah. So sun will be the common noun as well as it will be the singular noun. Okay. इस तरह से जितना भी नाउन हम लोग ने पढ़ा है, सो ट्राई टू कवर देम ऑल. ओके, सिंगुलर नाउन भी हो जाएगा, कॉमन नाउन भी हो जाएगा. ओके, दोनों ही कैटेगरीज में आएगा. काउंटेबल नाउन भी हो जाएगा. ओके, योर टर्टल्स लिव फॉर मेनी इयर्स. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन वी हैव सीन टिल नाउ, रिकॉल दैट और सारी की सारी कैटेगरीज में पुश करने की कोशिश कीजिए. So these are very basic examples. Once you have clearly understood the concept of noun, okay, then we will move on कि कुछ बहुत difficult sentences are there. Yeah, so turtles is the noun. Okay, countable nouns में तो आएगा ही, as well as common noun में भी आएगा. Okay, third one, there are 4 tables and 8 chairs in my office. Yeah, table, chairs or office will be there. Table, chairs will come under the category of countable noun. Okay, concrete noun it will come. Then you can also put it in under the category of, if we talk about gender, तो neuter noun की category में भी आ जाएगा. Okay, so that is what I was talking about. Okay, fourth one, she has a swimming suit for her. Yeah, swimming suit will be there. Okay, what type of noun it will be? Okay, possessive noun कैसे होगा? Possessive noun में हमेशा जो है वो apostrophe s present होना चाहिए. Okay, so यहाँ पे apostrophe s is not present, so it will not come under the category of possessive noun. Okay, हाँ यहाँ पे अगर ऐसा लिखा रहता है that Sheila और the name of the girl must have been given and Sheila's ऐसे करके apostrophe और that swimming suit ऐसे करके कुछ sentence रहेगा, so then maybe it can come under the category of possessive noun. Okay,
Okay, last one, who has won a trophy? Yeah, so trophy will be common noun. Okay, concrete noun. Okay, again it will come under the category of neuter noun. Okay, so this is what it is. Okay, so now we will talk about that what are the different cases of noun. ठीक है, पहले तो हम लोग ने genders देख लिया noun का, अब हम लोग cases देखेंगे. ठीक है, so cases important क्यों है noun में, क्योंकि ये हम लोग को noun का position बताता है. Okay, basically cases जो है it tells us about the position of noun in a present sentence or in a given sentence. So there are basically 5 cases. First is nominative, second is objective, third is dative, fourth is possessive, fifth is vocative. Okay. Nominative case जो है वो हम लोग को ये बताता है कि whether the noun present in the sentence is a subject or not. ठीक है, मतलब nominative case का मतलब ये हो कि noun जो है उस sentence में subject के रूप में act कर रहा हो. Okay, so it will be acting as a subject of a verb. Okay, so that will be nominative case. Like here it can, you can see the painter paints the portrait. Okay, so painter यहाँ पे noun है. Okay, as well as it is a subject because यहाँ पे action हो रहा है. Okay, the painter paints the portrait. What is painter doing? It is painting the portrait. So यहाँ पे painter will come under the case of nominative case. As well as painter जो है वो आपका common noun भी है. Okay, again the same thing. The lawyer argued with plausibility. So lawyer is doing some action. He is arguing. Lawyer is acting as the subject of the sentence. Okay. As well as lawyer is a common noun. So it will become a nominative case. Okay. The second type of case which we also refer to as accusative or objective. So यहाँ पे noun का position जो है वो objects के रूप में change हो जाता है, यानी कि it will act as object of a verb or object of a preposition. Okay. So when we will be doing verb and preposition, it will get more clear to you. Like here, the vendors sell mangoes. Okay, so यहाँ पे mangoes is acting as a object. Okay, so it will be noun in the objective case. Okay, the farmers built a fence. He drove across the country. Okay, so जब हम लोग noun as a object कर रहे थे, yeah, so my connection got lost. Just a second. Yeah. So when we were doing noun as our objects, ठीक है, जब हम लोग noun as objects देख रहे थे, then only I have told you कि noun as objects जब भी होता है, so either noun will act as indirect object or direct object. ठीक है, तो objective case में बिल्कुल वही चीज होती है when noun will start acting as the object of the verb or object of the preposition. Okay, और यहाँ पे वो accusative या objective case हो जाएगा. ठीक है. Then the third case of the noun will be dative case. तो यहाँ पे वो indirect object की तरह काम करेगा. Okay, means noun will act as a indirect object. ठीक है, accusative या फिर objective case में वो किसी भी तरह का object के रूप में काम कर सकता है, whether it may be direct or indirect. But dative में it will only act as the indirect object of the verb. Okay, so Rohan bought me a flower. ठीक है, रोहन जो है वो flower लाया, किसके लिए लाया? मेरे लिए लाया. ठीक है, तो इनडायरेक्टली बोला जा रहा है. विक्रांत गेव खुशी अ बुक. ठीक है, विक्रांत ने बुक दिया, किसको दिया? खुशी को दिया. इनडायरेक्ट. द टीचर आस्क्ड हर्षित अ क्वेश्चन. टीचर ने क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा? हर्षित से. इनडायरेक्ट. ठीक है, सो जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सो इट विल बी नाउन इन द डेटिव केस. पॉजेसिव केस तो हम लोग ने पॉजेसिव नाउन देख लिया है, सेम चीज है. ठीक है, पोजेशन जब भी हम लोग को दिखाना होगा, ओनरशिप दिखाना होगा, सो नाउन विल बी इन अ पॉजेसिव केस. ओके, this is your pencil, your will be possessive case. This is the teacher's manuscript, teachers will be the possessive case. The mob occupied the city square, cities will be the possessive case. ठीक है, सेम चीज हो रहा है. apostrophe ऐसा आएगा. ठीक है, कभी कभी your, me ऐसे टाइप का भी वर्ड्स आ जाएगा, तब भी होगा. ओके,
Premchand's novel, Mother's Love, the Prime Minister's speech, Tiwari Academy solution, a month's holiday. Okay, so all these are noun in possessive case. The last type of case is vocative case. Vocative case ऐसा case है जिसमें noun जो है ना वो किसी को बुलाने के लिए यूज होता है, मीन्स इट इज यूज टू कॉल, और if you have to gather attention or to capture someone's attention, okay, then you will use this type of noun, okay, that is vocative case. Like Mr. Malia, people are waiting for you in the hall. Okay, so आप Mr. Malia का attention grab करना चाहते हैं, that everybody is waiting for him in the hall. Okay, then here it will become vocative case. Or come here boys, Naresh, listen to me. Again you are trying to capture the attention. Okay, vocative case too, we can also call it as nominative of address. Okay, so this is what are the 5 cases. Okay, apart from that there is one more thing, noun in apposition. ठीक है, noun in apposition का meaning क्या होता है? When one noun tries to follow another noun, okay, और वो उसको describe भी करता जाए, तब वो हो जाएगा noun in apposition. ठीक है, यानी कि एक noun दूसरे noun को follow कर रहा है और साथ ही साथ उसको describe करने का भी काम कर रहा है. Okay, like Ram, our captain made 50 runs. Ram is also a noun, captain is also a noun. ठीक है, so Ram जो कि एक captain है, उसने क्या किया? 50 रन बनाए. ओके, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर. तो ये सारे के सारे सेंटेंस हम लोग हमेशा एनकाउंटर करते रहते हैं. ओके, व्हेनेवर वी रीड एनी एक्सट्रैक्ट, पैसेज और स्टोरी, ओके, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम, सो इट विल बी नाउन इन एपोजिशन. ओके, तो ये 3 केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन में. पहला है नॉमिनेटिव, दूसरा है एक्यूसेटिव, तीसरा है पजेसिव. ठीक है, नॉमिनेटिव जब सब्जेक्ट बन जाए नाउन, एक्यूसेटिव जब ऑब्जेक्ट बन जाए, पजेसिव जब पोजेशन दिखाए. ओके, सो गाइडलाइंस और द रूल्स वी हैव ऑलरेडी सीन. प्लूरल नाउन का उसी चीज को मैंने फिर इलैबोरेटली डिस्कस कर लिया है इन द स्लाइड्स. सो व्हेनेवर द पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू, यू कैन वंस अगेन चेक. ओके, ऊपर में जो हम लोग ने चेक किया था सेम चीज है. ओके, या बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. ओके, कुछ एक्सेप्शन है नाउन में, जैसे कि पहला एक्सेप्शन जब हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करते हैं. सो इफ एनी ऑफ द नाउन इज एंडिंग इन एफ और एफ ई, ठीक है, एफ और एफ ई में अगर नाउन एंड हो रहा है, ठीक है, तो देन यू कैन ऐड ई एस. ओके, देन यू कैन ऐड वी ई एस. ओके, बट अगर कभी कभी क्या हो रहा है कि इफ द नाउन इज एंडिंग इन ओनली एफ, ओके, मतलब कि बहुत सारे नाउन में क्या होता है कि इफ द नाउन इज एंडिंग इन एफ और एफ ई, तो कई बार जो है हम लोग ये वी ई एस वाला जो हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते थे, वी समटाइम्स डज नॉट यूज इट. ओके, उसके बदले में वी सिंपली ऐड एस. ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शन है. जैसे कि बिलीव में लास्ट में एफ आ रहा है, सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी मस्ट ऐड प्लस वी एस. ठीक है, प्लस वी एस, सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड टू प्लूरल फॉर्म. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ भी सिंपली ऐड एस एंड इट विल बिकम बिलीव्स. ओके, या फिर रूफ है सो इट विल बिकम रूफ. ओके, नॉट रूफ्स, इट विल बिकम. सो ये कुछ एक्सेप्शंस है कुछ वर्ड्स के, लाइक क्लिफ विल बी क्लिफ्स, सेफ विल बी सेफ्स. ओके, देन द सेकंड एक्सेप्शन इज बहुत सारे जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि चाइल्ड चिल्ड्रन हो गया, मैन मेन हो गया, वुमेन वुमेन हो जाती है, फिनोमिना फिनोमिना हो जाता है, datum will be data, mouse will be mice. Okay, so completely the form changes whenever you are converting singular to plural. And third exception is कि कभी कभी form बिल्कुल भी change नहीं होता है, whether it is singular or plural it will remain same. Okay, dear dears, piler pilers, mums mums, ship ship. So ये 3 exception है सिर्फ और सिर्फ. पहला exception यही है कि कभी कभी f और f में ending हो रहा हो, so you will simply add s. Second exception is completely change of the forms in singular and plural, and the third exception is there will be no change in the forms. Okay, so with this our topic of noun is finished. I hope the noun is clear to you. Okay, and tomorrow we will be doing exercises. So any questions are there before we end the class? Anyone? Okay, so we will be practicing questions tomorrow, and then we will starting a new topic, that is pronoun. Okay, okay, so thank you everyone, and we will meet in the next class. Good night for today. You can leave now.